Hello students, Jai Swaminarayan. I hope you all are well and fine at your home. Today we will continue our explanation from page number 8. Draw the sketches following vehicles. You can see some of the sketches of the vehicle is given. Okay. Nowadays the producer of mango are very happy because this occupation is developed at national and international level. Our mangoes are exported to different states of our country and also to the foreign countries. They are saying that अभी जो हमारे फार्मर्स है, जो प्रोड्यूसर है मैंगो के, दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज द मैंगो इज़ एक्सपोर्टिंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ अवर कंट्री. दूसरे दूसरे राज्यों में भी एक्सपोर्ट होते हैं और फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाते हैं. ड्यू टू दिस दे आर गेटिंग लॉट्स ऑफ प्रॉफिट. Transportation of mangoes in a huge quantity is carried out by trucks and airplane. Huge quantity means that अगर बहुत सारा अगर यूज भेजना हो, एक्सपोर्ट करना हो या कहीं लाना और ले जाना हो तो they are using by truck and airplanes. It is a matter of concern for our environment and health that use fertilizer and pesticides have increased in mango orchard. Due to this, the land quality is deteriorated and it's become infertile. Dangerous chemical is used to ripen the mangoes quickly, which harm our health. They are seeing that nowadays for exporting so early all the mangoes, what they are using, they are using pesticides. हम बोलते हैं ना उसको दवा डाल के मैंगोज़ को पकाते हैं. They are using pesticides जो कि हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है. At present, many farmers grow mango by organic method without using chemical and keep our health as well as their land good. Some people buy raw mango, get them ripen at their own home using dry grass, jute, sack, onion, paper or grains and enjoy them. But some of them are using organic method also for ripen the mangoes. At our home also might be in this season our parents are bringing, मम्मी या पापा घर पे मैंगो रॉ मैंगोज़ दे आर ब्रिंगिंग राइट. वो उनको कच्चे मैंगो को वो रख देते हैं, फिर वो धीरे धीरे घर में पकते हैं, उस तरह से फिर हम उसे खाते हैं राइट. तो सम ऑफ द फार्मर्स आर यूजिंग ऑर्गेनिक मेथड ऑल्सो. Many types of farmer are in existence since many years. Earlier, huge native mango trees were more in numbers. Commonly, 3-4 mango trees were seen in each farm. Nowadays, farmers are growing grafted mangoes only. Grafted means what? Grafted का मतलब होता है कि एक ही प्लांट में दो तरह के पौधे लगाना. उसकी डंडियों को तोड़ के उसमें दूसरी डंडी जॉइंट करके उसमें दो तरह के पौधे लगाना, उसको हम बोलते हैं ग्राफ्टेड. Native mango trees are about to extinct. If there are no mango trees, where will we hear the cooking of cuckoos? How we will enjoy mangoes climbing on tree like our grandfather when they were kids? How we will enjoy the visit of mango orchard? Think this, you have to imagine and think. If you will visit to mango orchard, what you will do over there? Write a report on a problems related to existence of mango and mango trees. Now see here below, one question is given. A wooden bullock cart carry 200 kilogram of mangoes. 200 kilogram of mangoes. But other vehicle can carry mangoes or mango boxes as per shown in the table given below. The table also show the speed of the vehicle of each type so that we can know about the distance of each type of vehicle can cover in 1 hour. Now look at the table. You can see below one table is given. Here type of vehicle is given: bullock cart, rickshaw, trailer, tractor, truck. Here it is given transportation of mangoes in a trip, कि एक ट्रिप में कितने मैंगोज ये व्हीकल कैरी कर सकते हैं. Then here it is given speed of vehicle, distance covered in kilometer means
इन 1 आवर में ये व्हीकल कितना किलोमीटर कवर कर सकता है. बेस्ड ऑन दिस वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. How many kgs of mangoes each vehicle can transport in its 7 trip? ना हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 7 ट्रिप में हर एक व्हीकल कितने मैंगोज ट्रांसपोर्ट कर सकता है. तो हमें तो 1 ट्रिप का दिया हुआ है कि इन 1 ट्रिप बुलक कार्ट कैन टेक 200 मैंगो. तो 7 ट्रिप में कितना होगा? वी विल मल्टीप्लाई बाय 7. हम यहाँ पे क्या करेंगे? 200 मल्टीप्लाई बाय 7. सेम फॉर रिक्शा ट्रेलर 600 मल्टीप्लाई बाय 7. ट्रैक्टर 800 मल्टीप्लाई बाय 7. ट्रक 6000 मल्टीप्लाई बाय 7. क्यों हम मल्टीप्लाई बाय 7 कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक ट्रिप का दिया हुआ है और हमें फाइंड किसका करना है? 7 ट्रिप का. तो विल मल्टीप्लाई बाय 7. ओके. हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ ट्रैक्टर इन 6 hours? अगेन यू कैन सी इन द थर्ड कॉलम किलोमीटर इन 1 hour इट इज़ गिवन. अगर 1 hour में ये व्हीकल के किलोमीटर्स दिए हुए हैं तो 6 hours में कितने होंगे? वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 6. फॉर एग्जाम्पल 4 into 6 बुलक कार्ट कैन कैरी कैन कवर 4 kilometer in 1 hour. तो वी विल डू मल्टीप्लाई बाय 6. तो वी विल गेट what the distance covered by the tractor in 6 hours. Okay, in the same way we will find the distance covered by all the vehicle by multiplying 6. How much time will be taken by rickshaw trailer to cover the 60 kilometer? Now rickshaw trailer is given to you. You can see the speed of vehicle is given. In 1 hour it covers 12 kilometer. In 1 hour it covers 12 kilometer, right? We want that to cover 60 kilometer how much time will be come? तो 60 kilometer में कितना टाइम लगेगा? We will do cross multiply. That means 60 divide by 12. If you will divide 12 ones are 12, 12 5s are 60. Means it will cover 5 hours to cover 60 kilometer. Okay.